Namaskar and welcome to OPSC Intent, which is a part of Unacademy. So 2016 रो पेपर रो डिस्कशन हमें कंटिन्यू करिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. Which of the following organization has developed the Universal Health Coverage Index? Universal Health Coverage Index कहा द्वारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वॉशिंगटन सेंसस, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज WHO. Next question. The main pollutants responsible for causing greenhouse gas acid rain, ozone layer depletion कहा द्वारा ये सब जिनसा हिथिबो. So greenhouse पाई mostly responsible CO2, similarly methane, water vapor ये सब जगह. Acid rain कहले sulfur dioxide and nitrogen oxides. Ozone layer depletion कहले CFC, HFC ये सब जगह. So let us find the answer. H2O, CO, CFC, CH4, CO2, NOx, CO2, CFC, O3, CO2, SO2 and CFC. So respectively कही तो ग्रीन हाउस गैस पाई CO2, तापरे एसिड रेन पाई SO2 और ओजोन लेयर डिप्लेशन पाई CFC. तो ऑप्शन डी हम करेक्ट. नेक्स्ट वन को जीवा. When was the National Food Security Mission launched in India and what were the components? So National Food Security Mission 2007 अक्टोबर लॉन्च करा जाइतला. राइस, व्हीट ऑफ पल्सेस तीनटा जक ही तार कंपोनेंट रे थिले. नेक्स्ट वन. विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग गैसियस एयर पल्यूटेंट? गैसियस एयर पल्यूटेंट जोटा थिबो ताको केमतिया तो एब्जॉर्प्शन करकिना ताको लिक्विड रे कन्वर्ट करिवे. सो बाय दैट दिस इज द आंसर. सी इज द आंसर. अरेस्टर, इंसिनरेटर, absorption, electrostatic precipitator. So the correct answer is absorption. Next question. Which of the following organisms fix nitrogen in aquatic ecosystem? Aquatic ecosystem पचारची तो सेठी हमको cyanobacteria मिलबो and cyanobacteria will be basically responsible for fixing this nitrogen. Okay. Next question. What is carbon credit? The options are: it is the difference between the carbon emission allowed and actually emitted carbon. It is the loan amount by IMF for reducing pollution. It is the loan given to the poor people for buying modern stove. It is the fine amount imposed for excess emission of carbon dioxide. तो कार्बन क्रेडिट गोटे सर्टिफिकेट परी कथा है. से सर्टिफिकेट माने कौन सी भी एंटिटी को अधिकार अच्छी 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट माने कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करिबा या कार्बन डाइऑक्साइड 1 टन इक्विवेलेंट कौन सी भी अलग ग्रीन हाउस गैस को एमिट करिबार ता पाखरे राइट्स अच्छी. सो दैट इज वन कार्बन क्रेडिट बेसिकली. सो सपोज देर आर सम कंट्रीज जो माने कि कार्बन क्रेडिट तांको पाखरे अच्छी ये कार्बन क्रेडिट केतकी से माने एमिट करि परिबे किंतु एमिट से माने करू नाहंती. एंड सम कंट्रीज जेमति कि यूएसए, चाइना या ए माने बहुत अधिका एमिट करि चलचंती अबव देन देयर लिमिट. ताले से माने याको किणी परिबे बेसिकली. ओके. So they can basically buy it. So the correct answer will be, it is the difference between the carbon emission allowed and the actually emitted carbon. जेतिकी कार्बन एमिट कराई और केतिकी कार्बन एमिशन अलाउड अच्छे. So this is basically your carbon credit. Okay. Next question को जीबा. The red data book contains the data of dangerous species, extinct species, economically important species या endangered species. So red data book रे कौन था ना threatened species, endangered species ए मने थांदी. बाकी सब suitable ही होनी. The correct answer is threatened species. किंतु threatened तो नहीं तो हमें endangered को ही नबा. Next one. IUCN, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, headquarters is at dash. So the correct answer is Gland in Switzerland. Next question. The highest per capita emitter of carbon dioxide in the world. So it देखो तो per capita emitter पचारची. जदि highest emitter थांता तले maybe USA, China answer ही थांता. किंतु per capita पचारची. Per capita is Saudi Arabia. जदि हमें per capita देखिबा तो USA रो rank पाखापाखि 47 या in 40s आसीबो. Next one. What is the animal symbol in WWF, World Wildlife Fund? So the correct answer is giant panda. Next one. Lion-tailed macaque is the key fauna species of which biosphere reserve? Lion-tailed macaque को biosphere reserve रे मिलबो. So नीलगिरी biosphere reserve से पाखरे आपनकर silent valley national park से सब जगह मिलबो. So this is in the नीलगिरी biosphere reserve. Option A is correct here. बाकी ऑप्शंस रे देखला दिहांग, दिबांग, दिब्रू साइखोवा, नोक्रेक ये सब भी देखला.
Next question देखिए, the occurrence of pesticides like DDT in the higher tropic level is in an ecosystem is termed as dash. So जमती जमती ट्रॉपिक लेवल रे आम हाई जाऊँ जदि पेस्टिसाइड्र जो कंसेंट्रेशन अच्छी से बढ़ी चलती द अकरेन्स ऑफ पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी इन हायर ट्रॉपिकल लेवल्स इन द इकोसिस्टम या तो या कौन कहते. So this is your biomagnification. Okay. Next question. Who said the earth provides enough for satisfying every man's greed but not every man's need but not every man's greed? So the correct answer is Mahatma Gandhi कहते. Next question को जिबा. Which of the following Indian states or union territory has maximum percentage of mangrove cover in the country? Mangrove cover सबठु अधिका को country रे को state रे अच्छे. So the correct answer is West Bengal. Next question.